हेलो दोस्तों, वानर हियर। तुम सभी का स्वागत है एक ब्रांड न्यू वीडियो में। आज हम कंटिन्यू करने वाले अपनी पोकेमॉन अनबाउंड की सीरीज। तो बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ने पिछली बार हमारा वो मेन विलन तो कोई और था, टीम शैडो तो बस अपने बच्चे को देखने के लिए रिवाइव करा था। उसकी मंशा गलत नहीं थी, लेकिन यार अपना मेन विलन तो कोई और निकला। वो निकलो नाम है उसका। हाँ, तो वो शायद से अभी इधर जा रहा है ना, मारुआन की हेल्प करने बोला था उसने हमें। तो अब सीधा इधर उस भाई स्टार्टिंग ही लास्ट दिखा दी। उसी आर्थर जैसे नहीं लग रहा। कौन है, कौन है वैसे ये? ओह ओके, मरा पड़ा है, लेकिन है कौन? धप्पा नहीं रहेगा ना पीछे से? लगा ही था। कौन है ये? आई डोंट नो हु यू आर बट यू आर नॉट गेटिंग पास मी टू। बड़ा है जी। ये कौन सा नवीन टीम आया क्या ये? भाई ये तो नवीन टीम आया है ऐसा लग रहा है। ओके, लेवल तो भाई चिंदी है। ओके यार, सर्दी हो गई यार मुझे बहुत। अब सर्दी का कुछ नुस्खा करना पड़ेगा। ओके, ये फेरी टाइप यूज़ करो। ये फेरी टाइप ट्रेनर है क्या? हाँ, लग तो वही रहा है। हाँ, वो तो रहेगा ही फेरी टाइप। मुझे डाउट किया है, लेकिन हुआ तो ये ना। हाँ, ये फेरी टाइम टीम है। मतलब मेरे गार्चम के लिए तगड़ा सोचा है इन्होंने। लेकिन मेरे पास अपना ये भी तो है, शिफू। वो तो स्टील टाइप है ना। कि अब आगे क्या बोल रहे हैं? वानर, बट यू आर सपोज टू बी आउट ऑफ द पिक्चर। हाउ इज दिस पॉसिबल? आई नीड टू वंडर। छोटे, तूने अपना समझा क्या है मुझे? ओ नो 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 नो, वेगा सर। ओह शिट, ये वेगा ही बॉस है क्या? अरे ये तो अपना ये जिम लीडर था ना सेकंड। भाई ये तो गद्दार निकले यार। मुझे लगा ये जिम लीडर होगा। भाई साहब, इतना बड़ा धोखा इसने। भाई इसने तो पूरा अलट पलट कर दिया। वेगा, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस? मार्लोन, आई वाज इन्फॉर्म्ड दैट यू आर बीन डिस्पोज आउट। भाई ये बंदा कितना यार, मुझे लगा कोई जिम लीडर है तो जिम लीडर नहीं, ये तो कुछ अलग निकला। भाई इसने क्या गंदा धोखा दिया यार। आई डोंट केयर व्हाट यू आर टोल्ड। द रेस्ट ऑफ द शैडो वॉरियर्स, व्हाट हैव यू डन विद देम? The Shadow Warriors deemed this place unsafe for after the previous incident. Most have been already moved somewhere more secure. Sir, tell me where they are, Vega. मुझे उस आइडिया का सेल दिख रहा, वो लूंगा मैं। और so help me, I will turn you into one of them myself. Please, do you really believe you can still order me what? I am Agent Vega of the Science Society. While I will serve fit, and you lost your authority over me when you broke your contract with her. Openly bring Shadow Warriors out into the public. Hey Vega, रुक, तुझे देखा तो साले। Trying to release to a dark force known for its destructive nature without first understand it. The Rangers are already determined to find something to catch us all. So we should consider ourselves fortunate that no one has discovered that we were getting living weapons. You must have some idea of the potential consequences were fair to ever find out. Yes, especially now when she is close to achieving perfection. Sir, excuse me sir. अरे बोलने देना यार उसे, तू क्या बार बार उसको डिस्टर्ब कर रहा है? We should क्या है, कुछ तो था। But even there we still had to try. All we had to show was failure after failure. Tell me, what would you have done, Vega? I would have continued waiting patiently. The last experiment alone should be made it clear that practical application was well within research. Fake certainly has not given up. मुझे फेस ही लग रहा है, वही सबसे मेन विलन लगती है मुझे। भाई इतना इरिटेटिंग लगी है ना वो, सबसे ज़्यादा तो मुझे वही लग रही है मेन सर की विलन। But then how is useful you have acted accounting your wishes? What are you implying? What do you know about what fate truly wants? Who knows? She won't even tell me, and I am a right hand man. She always been a type to keep her cards close to her. मैंने बोला ना वही मेन विलन। Just to clear up any misunderstanding, the Shadow Warriors, what do you plan to do with them now? Please don't ignore me, sir. Destroy them, the whole right lot of them. I had time to reflect on what we did to all those poor Paka. It was wrong, all of it. None of them deserve to be experimented on, especially not in that way. I can't change what we did, but I can certainly end their pain now. And I cannot let you do that. तू मुझे आने दे। Ekla still has need of them, and as per our contact phase, providing him with both guns and Shadow Warriors all for his new organization, the Light of June. But he refused to stand aside and let us leave. One of you help me get rid of it. ये तो अब नया सीरीज स्टार्ट हो गया, जैसे पोकेमॉन में नया सीरीज स्टार्ट हो जो वैसे नया सीरीज। मुझे तो मजा आई, मुझे तो कंटेंट ही मिल रहा, मुझे कुछ टेंशन की बात नहीं। आई होप इट वॉज वर्थ इट मार्लोन। ओके, आ गया वो मैं। हा सर, इट्स वानर सर, हियर ही इज हियर टू। So much for the most secure item storage in the world. Warner, so you survived that trip back too. Quickly, we need to deal with Vega and his cronies. Your Pokemon can still fight, can't degrade. Choose up 3 better weapon. Okay, क्या कौन सा करें? अपना स्टार्ट करते हैं एंटर। हाँ, कुछ तगड़ा ही रहते हैं ना। चलो। One, it is truly unfortunate that you had to find out this way, but I will not hesitate. You are no longer a mere opponent, you are an enemy. अरे जिम लीडर बोल के तूने धोखा दिया यार। तूने मेरा दिल धोखा यार, बहुत बुरा। मुझे, मैं तेरी कितनी तारीफ करते थे यार, लेकिन यार वो एक सोच रहा था ना, पहले जो अच्छे लगे वो विलन हो गए इसमें, और जो विलन लगे तो वो अच्छे हो गए। पूरा उल्टा चल रहा है। क्या करे, कौन सा अटैक दे? अर्थक्वेक से ये भी मरेगा ना, तो फायर फैंग देते ना, इसको देते हैं। अपना क्रोकोडाइल कुछ तो करेगा ना उधर। अरे यार, आयन टेल उसको देना चाहिए था ना, गलत कर दिया। होम क्लॉस, अरे अटैक बढ़ा है अपना।
तो अभी कौन सा करें, शार्की का? अच्छा नेगेटिव इमोशन, हाँ ये वेगा से बेटर करता तो नेगेटिव इमोशन होता है ना, ये भूल ही जाता हूँ मैं। तो अर्थक्वेक से ख़त्म करें? नहीं यार, तीनों को लगता है। फायर फैंग, अरे यार उसको लगाते हैं। तो आयरन टेल करके ख़त्म करेगा? प्लीज़ कर दे। दार्जिलिंग यार, ये तो दोनों को लगा। ओके, नेगेटिव इमोशन तो चल ही रहा है यार, वेगा का ही दिमाग ख़राब करे। तो मैं फायर फैंग इससे एक ख़त्म करता हूँ इस। अरे यार, ये गलत बंदे को क्यों लग रहा है बार बार? वो तो मेरी एचपी ने खा जाएगी। सोच रहा पोकेमोन चेंज कर दूँ। अब चलो, क्रोकोडाइल मर गया अपना, लेकिन इमोशन से वैसे ही हो रहा है। और उसका भी ओपोनेंट कौन है यार? ओके, अभी कॉकटेल। यार इसकी टीम भी इविल है वैसे। ड्रैगन को अर्थक्वेक से ख़त्म करो भाई, दिमाग मत खराब करो भाई। ये मेगा इवॉल्व होने लगा है इसके पोकेमोन, मुझे मेगा इवॉल्व लेना पड़ेगा। मतलब अपना कैप्टन का होगा ही ना। यस, अच्छा कि इसने ये किया। तो अभी अगला कौन सा पोकेमोन देगा भाई? अपने टीम में तो अच्छा दिमाग यूज़ किया, देखो इसने प्रोटेक्ट यूज़ करके। ओके, ये तो इजी एरिया में ख़त्म कर दूँ, फायर फैंग से ख़त्म करता हूँ। चलो, ये बैटल जीत गया, लेकिन ये वही अच्छा था ना जो अभी मिला था बैटा। हाँ, सेम ही तो थे। ओके, अभी अपना क्या था, क्या चलो वैसे। दिस यूजर्स गन्स लेट मी डाउन, नो नॉट अगेन, यू गॉट पैसे मिला यार। ऑल गर्ल्स रिटेड बैक टू योर न्यू बेस, वी आर मोस्टली फिनिश दैट वी केम फॉर दैट, देयर इज नो नीड टू रिमेन हियर, नो यू डोंट, यू आर नॉट गेटिंग अवे दैट इजीली। कौन कौन? अच्छा इसको, यू कांट रिस्ट्रेन मी, फॉलो ऑनलाइन वगैरह डिपेंडेंसी। उससे पहले यार कुछ तो करे ना। हाँ यार, ले लेते हैं ना, सेल मिल रहा है तो लेना चाहिए ना। मुझे सेल में होना है। ओके, तो स्टोरी स्टार्ट हो गई। अभी क्या कर रहे हैं ये? दैट्स नो वेज फॉर यू टू रन वेगा। इस साइड से कूदेगा शायद, मुझे वही लग रहा है। नाउ टेल मी वेयर योर कीप इन द शैडो, और ये बच भी जाएगा मुझे। ऐसे भाई स्टोरी में ऐसे ही होता है, जब भी विलन की से कूदता है ना तो लास्ट में बच जाता है। हमें लगा ये मर गया हो, लेकिन लास्ट में यही बंदा के हमारी मारेगा। देखो बहुत बुरी तरह से लड़ेगा ये फिर बाद में। यू थिंक यू हैव मी कॉर्नर टू यू मार्लन, क्वाइट द ऑपोजिट, इट इज यू हु विल soon be pinned down. What's that supposed to mean, Vega? I am sure you are aware of the incident that took place here. Yes, of course. What's your point? The monster that appeared, ग्रूडन आने वाला है क्या? Don't allow this fools unborn enough to be present for truth. मैं तो पकड़ने वाला भाई, ग्रूडन आया था, and he'll do something. It only sleeps now, having been overwhelmed by sheer number. But supposing one has the mean to reawaken and control. No, so we will not planning it. Oh yes, my lord. Faye had एक लोग पास में certain artifact capable of controlling the monster that slumber. उसके पास और भी बहुत सारे थे. Beneath the mega, and now ग्राउंड और इस पर तुम्हारे अवे करना है, रिवॉर्ड टू योर प्रेमोलो स्टोन। यार मुझे पकड़ने दे यार प्लीज यार। वो क्या आ गया अपना ग्राउंड? व्हाट नाउ मार्लॉन, यू कैन नॉट कीप होल्डिंग मी यार, द केव विल सून कोलैप्स एंड वी विल बोथ विल थ्राइव, यू कैन नॉट होप टू फाइंड अ शैडो वारिस व्हिच इज बuried under the rubble. It's simple, if that happens I will use crocodile to dig my way out, even if you must depend on Vega. I know Faye, there are only so many places in Boreas she considers secure enough to store the shadow warriors. Once I reach on Zep in Frozen Heights, we will show everything possible location until we find them. I thought you had continued to be stubborn, Marlon. Grow down. The earth trembles with your every step. Now subdue them. Okay, तो क्या पकड़ने नहीं मिलेगा मुझे? Can you keep your footing, Marlon? And I shall take leave at my cue to leave. बंदा तो निकल गया यार, भगोड़ा गई का। Curses, he escaped. Warner, you have to stop Grodan Apples. If not, that cave will call us and we will both be trapped here. Warner, are you alright? No, we have been separated. Wait, these Pokeballs are on my side, aren't they? Warner's Pokemon. You must have been dropped when Groudon used their attack. What now? My own Pokemon are too bad here to take that thing on. Wait, Warner, let me use that Pokemon. I will come on your Pokemon. Just direct me on whether you to fight or switch. हाँ अंधा याशी, मुझे पकाना था और इससे ये जानबूझ किया है इन्होंने, पता है मुझे। तो भाई बंदे ने सीधा अटके क्यों किया? ओ वन शॉट हो गया मेरा ग्रूडन भाई साहब, लेकिन यार मुझे चाहिए था यार पोकेमॉन। पूरा ग्रूडन स्ट्राइक इनटू द लावा एंड फेल इनटू दिस मोर वंस मोर। फ्यू वी सर्वाइव। रुको एक मिनट, पकड़ सकते हो क्या? देखते हैं ट्राई करके। ओके, क्यूब बॉल से कुछ पकड़ सकते हैं क्या? पता पकड़ ले यार। अच्छा नहीं हो रहा है तो फिर ख़त्म ही कर देते हैं ना इसको। ख़त्म कर दिया। अरे यार नहीं, मेरे से नॉन इफेक्टिव रहता ना, क्यों मर गया? कोई ना, अपना ये डिस्ट्रॉयर तो है ना, डिस्ट्रॉयर को सेंड करके अर्थ पावर करते। यस ओके, सुपर इफेक्टिव होता तो हो गया इजी। तो अपना डिस्ट्रॉयर को एक्सप्लोर हो गया, शिफ्ट भी लेवल 71 का हो गया। The Groudon sank into the lava and fell into its least ever once. For few, we survived somehow. Crocodile destroyed the rocks, used rocks में। ये तो पहले नहीं कर सकता था। Thank you for your help. I honestly don't know what I would have done with you. Here I suppose you will want your Pokemon Bank. How about you know one second thought? That's not a good idea. Look, I am grateful for your help. Truly I am. However, this next task is something I need to handle alone.
Right now I need to secure Zep's aid in finding the lighting of Rune's new base. If you follow me to our base in Frozen Ice, Zep will never agree to help. So please honor for both our sake, stay away from our base. Okay, return to Shadow base in Frozen Ice and find Zep. तो मुझे जाना ही है क्या? ओके जाना ही पड़ेगा। तो हम लोग आ गए बेस पे, तो अभी आगे किधर जाना है? ओके नहीं रे, इधर को ना पोकेमॉन देना। तो यार ये शैडो वाले लड़ेंगे क्या मुझसे? बस लड़े नहीं यार, अब हम लोग तो हमारा मकसद तो एक ही है ना, बचाना पोकेमॉन से। ओके यस, कौन सा पुटी यूनिफॉर्म? ओके शैडो का, अच्छा तो अब मैं नहीं योर क्लोज आर ऑन पुट नो, तो अब मुझे मतलब डिस्गाइज करके बनना पड़ेगा ना, जाके जाना पड़ेगा ऐसा ही। अच्छा है यार, मतलब हम लोग इसमें एजेंट का करें टांग डांग, लेकिन यार याद रखना पड़ेगा हमें कि ये था ये कुछ वो। ओ सर सम गाय विथ दैट ब्लास्टेड वे इन आई ट्राइड टू शो मी बट ही जस्ट शो मी असाइड। ओके तो ये क्या है? ओके की कार्ड मिला हमें, अच्छा वो इधर से है यार। तो फिर उधर उल्टा साइड क्या चालू था? ओके अभी इधर आ गया। ओ ये कौन है? अच्छा ये तो रेड है, हाँ रेड है ये रेड है, पीछे उसके डरोली को से क्या ओपन कर, मुझे लगा ही था ये रेड है। हाँ बोला था मैं रेडी है ये रेडी है ना वैसे। एंड सो फे है क्या? नहीं फे ऑर्डर द ग्रास टू जॉइन एक्लाउस लाइटर, यू अंडरस्टैंड नाउ मार्लोन? अच्छा ये मार्लोन है। फ्रैंकली द फैक्ट माय ग्रैंडसन साइंटिस्ट वर अलाउड टू रिमेन इज अ मिरेकल। आई सी आई नो आइडिया, मतलब रेड का बाप यही था, मतलब पापा यही था रेड का, और मम्मी वो थी यार, रेड को पता चलना चाहिए था। आई सी आई नो आइडिया थिंग्स दैट गॉटन दिस वे, बट आई थिंक आई नो हाउ टू मेक आउट द डिफरेंस, एंड आई नो दिस वे नॉट साउंड लाइक द मोस्ट एग्रीएबल आइडिया, बट what the? That's my uniform. Wonder, is that you? What? You are no, it cannot possibly you must be some sort of spy. Ekla, how long must you torment me? You thought you could fool me again, Faker, like he did. You want to I see that you wear Warner's face under the marks. You are still a far cry from the real deal. Once I have sent you running back to Ekla, deliver a message to him. For me, tell him that you all suffer for your irreversible sins. To be तुझे इतना भी नहीं समझ में आता, मैं एकला बोल रहा हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ, मैं एकला हूँ, मैं ये हूँ, कौन हूँ मैं यार, मैं क्यों वानर का मार्क्स फिरूंगा? तू भी पागल, ये ले ड्रैगन क्लॉ ले सीधे सकर पंच। अरे तू सक करते हैं, सकर पंच तेरा सक करता, समझा? ओके अभी आगे गेंगार ना, तो कौन सा पोकेमॉन चेंज करें? नहीं रे रखते, ये ग्राउंड टाइप से वीक है, लेकिन इसके पास ये भी तो है लेविटेट का। ओ मेगा युवा भाई साहब, सब लोग मेगा युवा हो रहे, मेरे पास ही नहीं है यार, क्या फ़ायदा मेगा युवा? अभी सेकेंड स्टेज आ गया ना, तो साइड से मेगा युवा करे हो पोकेमॉन को सब, इसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी ना मेरे से। हाँ लगा ही था, या फिर सकर पास पहला प्रायोरिटी अटैक है ना, इसलिए वैसा होता होगा। एक्सप्लोर नहीं चेंज नहीं करते यार, पूरा वन टेक करते ना। अब यार एक्सप्लोर यार और क्यों से ख़त्म होगा ना वही तो। हाँ हो गया, इजी था वैसे, एक्सपी तो अच्छी मिलती है यार। डिसीडियो ये डिसीडियो के लिए कुछ है नहीं यार, डिसीडियो मेरा फेवरेट पोकेमॉन है, आलोला का स्टार्टर। क्या दिखता है वैसे, अच्छा दिखता है। अच्छा ये घोस्ट टाइप यूज़ करता है ना मोस्टली, हाँ वही यार, सब लोग सकर पंच यूज़ करते हैं यार इधर, तुम लोग लास्ट एचपी से बचा, लेकिन बर्न से जाएगा या ओके। अपना शार्की का लेवल भी अच्छा बढ़ गया है। हाँ अब क्या बोल रहे तू? मैं क्यों the better side is alright, it cannot be, are you really Warner? No, this can't be true. yes मैं वही हूँ यार, कितने बार समझाऊँ अब तुझे? अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखा दूँ तुझे? Zeph, enough, we don't have time for infighting right now. Warner isn't the enemy, the light of Unis, and you can either accept that fact or else I will be assuming the command of what remains of the shadows. Thank you. Now then, what have you been planning, Zeph? From what I gather, we will be staging an attack on the light of the June's new base. That's right. I am having our remaining sentinel locate their base. Once they have managed to find it, we will take the light of June by surprise and destroy it. With their main force left killing, we will steer back the prison battle and what's remaining shadow warriors. They have left. However, I am still unsure as how too long it will take to locate them. And unfortunately, we are pressed for time. Right now, Ekla is with Faye as she studies Rupa. When she frees, Ekla intends to turn his power on board. If we can take out his base while he is gone, we can catch him out. Off guard, yeah. When he returns and see Rupa's power over once again. Without it, Ekla power will be greatly diminished. Roger that, Zeph, and I take it you're certain Faye won't react against us if we take action. I am certain modern from talking with some of our scientists, Faye could not care less about Ekla's goal. All she wants is to study their Pokemon. She will give them her support, of course, but for the most part, it is up to Ekla as to whether or not to he succeed. Of course, we should make light of how dangerous she is alone. And it seems to me that in order for our plan to go off without a hitch, we will need all the manpower we can muster. So I suggest we bring one along as well. Marlon, I don't understand. Why would you put so much faith in him? One has only tried to interfere with us people. What makes you think he will even be willing to help us? We were imprisoned together under Q's pressure, and while we were there, we made a promise to someone. We promised we will destroy the remaining Shadow Warriors and set their souls free. And Warner knows that as long as the Light of Rune is holding on to the Shadow Warriors, their souls will remain trapped.
Are you saying that not only did both of you survive a trip inside a cube, but someone else was there too? Someone who knew about the existence of the Stardew Valley. It was Arrows Zep, pay imprisoned in India 16 years ago. And not only that, it turns out Arrows is Warner's father too. Arrows? I see, so that's what became of him. Well, I am not surprised then. He was always quick to identify bugs in any system. If anyone could figure it out a way out, no matter how flawed it would surely be him. So, Warner, would you be willing to lend your ear? We instead you to gather what research we can and go light for Bruno directly. यार इसमें चॉइस का देना चाहिए था ना, अगर नहीं देते तो ये क्या होता चॉइसेस का। अगर कुछ हाँ में मतलब हाँ हम लोग मदद कर नहीं देते तो क्या होता, फिर हम लोग खुद जाके वैसे कुछ अलग स्टोरी डालनी चाहिए मेरे को। Yes, I am aware you and the shadows we have always been eye to eye, have we? Then if I trusted you with our most important secret, would that be enough? In that case, let me explain our true purpose was. The true purpose of the shadow was, it was all because 70 Egyptian has this past a story चल रहा है। As the old parents we came to visit him from our home region of Oasis. Jeff, how are you holding up? I am so sorry, Marlon, and I just heard about your son. I worry, Marlon, thank you for your condolences. It's good to see you again after all these years. I take you travel by boat to get here. How was the journey? Very pleasant. It looks a few days to arrive here, but the journey was lovely. Okay, if I remember correctly, you have a son too, right? We did. फिर अनफॉर्चुनेटली someone illness much too है your knowledgeable सजावी इसका मतलब बेटा रेडी है never thought about trying to bring him back of course as scientists we thought that if anyone could find a way it would be us sadly there were no matters to truly revive it we had no choice but to try and move on and a year of Ivory gave birth to two. It was one of the happiest moments of our lives. Of course we miss our first child but our new ones have done much to fill the voice in our teachers so where are they now so my old dog a friend of ours agreed to babysit for the time being. The Ayurved is now back in Frozen. Frozen as a friend of mine lives there as well. He's my old partner, the one who helped me found my own company. But around here he is simply known as the guardian of the bodies. He even managed to befriend a so-called mythical Pokemon. I think his wife recently gave birth to her own child actually. I don't quite remember the child's name. What about your newties? What are their names? Their names are Red and Melanie. Melanie कौन है? अच्छा Melanie नहीं याद नहीं है मुझे Melanie कौन. They are the most beautiful children in the world. Yes, that's Ivory and I are Red and Melanie Perel. अच्छा मेलोनी हाँ उसकी बहन है Red ever since he arrived he's been looking for us and I was always devoted leaving them both but after spending so much time away I had area of they could meet their older but how stupid I was. But I should take it from here. When I learned that we had both experienced the pain of losing our own children, I made an outcome but scientific knowledge and united together under one common goal. I felt with that result we could achieve the impossible. Of course Marlon and Ivory were most skeptical but after many attempts I convinced them. They agreed to return the child to the home in Hawaii and then move to Boris without them. Without knowing this, I was certain we should succeed. However, as we soon discovered that three of us could only do much as our own, and so we partnered with an independent organ known as the Science Society. The Science Society main villain, together with the help of our research suddenly gained. However, this research required my undivided attention. And so realizing that I simply could not oversee so many projects and not oversee once I stepped away from my position of CEO of QB Corp. In my place, I left it to a young woman, Faye, the leader of the Science Society. मैं यार इस फेक को मैं दिखा दूंगा यार बहुत दिमाग में जा रही है मेरी वे भाई यार सच में बहुत दिमाग में जा रही है SJP is the inventor of the super cube. The first to mean for simple story was a collaborative happen between your father and Faye. It's what allowed Cube Corp to take off and become the major influence in boys it is today. Sorry. And that is how she replaced me after all this. She practically stole Cube Corp, the company I founded with my own two hands, and she also allowed to steal my shadows from me too. Sorry. Oh my god. Phew, I should well on that now. Anyway, May was the one who gave us the template for the project as you have likely guessed. Thus, before I stepped down as CEO, I established a new branch at Cube Corp, entirely dedicated to the revival effect. It's called the Shadow Branch, or as you know, it is the Shadow. To avoid the tarnishing Cube reputation, I had to ensure our experience had no ties to the company whatsoever, and with that out of the way, we are able to experiment worry free. Ivory status report. We are ready to begin the first trial, Zeb. And let's begin, shall we? Everyone take our position. Zeb, are you certain that this will work? Of course, nothing is certain, Valor. It's merely the first of many prototypes. I don't expect forthcoming result or the first time. However, we can worry out the final points later. For now, let's find out this is merely a hypothesis or not. To start with, I just place this Pokemon here, and then place the simple image next to him. And finally, turn on the molecular fusion device. Okay, क्या हो रहा है? Now how this cloak is out to shield it from the light, it should become mobile. It's work. Now let's see if it can actually move its body. Oh, Fik Mano, hand me that control gauntlet. Take creature, you must obey.
I will admit this is not for what I was ordering. However, this certainly is a step in the right direction. Given time, we should be able to bring them back. All things considering, through the first test were rather smoothly. Face said we had to continue the research not to let a setback trip us up. Our words poured on my ear. We continue to work on the shadow, or however, even with the control countless some difficult to control. One lashed out at my face, leaving his scar you see today. Another lashed out on Marlon, shivering his arm, and yet, despite our injury, we pushed on. Over the course of several years, the Science Society helped us capture more Pokemon and combine them with more test subjects. Some were leaving us for face to go, and others were not. That is not to say we turn anyone against their will, of course. All guns that become shadow warriors did not willingly for the chance to gain great forward face. You were like a demon is driving us to cruel and crueler extremes in order to destroy our children. Of course, as suspicious, he had actually no interest in no at all. It was also always the shadow warriors you were invested in. Eventually, we concluded we would not be able to bring back our children using the shadow warrior. Despite coming close with our last prayer, the cost to our children would have been too great had we continued the same direction, so we were forced to try a new approach. Once that was extremely plausible, it recent events are anything to do go by. Okay, कौन सा क्या है? The plan is to bring ultimate weapon, the one mentioned in the old legend here to board it. But while that weapon may capable of mass history, it was able to same day used to restore the fallen king's Pokemon. And if the weapon could bring a Pokemon back to the state to vision, it could bring our children back as well. But how much of our idea and how much of it was Eklund's mechanism? Yes, under Jeff instruction, we began researching the dark force of Boris. At that time, we hoped to use its power to bring us the ultimate weapon. Of course, we had no idea the dark force was in fact our old partner Hoopa. And from there, you know the rest. समझ गया मैं क्या चल रही सब. Phew, well, that was a few explanation and I'll take it all in honor. Okay, now that you know what you really been going on, you should have no hesitation about working with us. I should apologize, or I believe you to be some sort of spy sent by Eklo. If I had known you had a really all along, I would have reached it less violently. Sir, we have detected eminence of the Upper Spot energy Multa. It's quite likely the light of rules man. Will Town, so the old base used by the Science Society now serves as a lighthouse. I should have known. Marlon, we cannot remain here any longer. Now that Ekla is dictated, we must strike quickly. It's time to rally our fighting force and report for Will Town. Prepare the shadow, we move outwards. Of course, Zeb, I doubt we have much time until Ekla return. I know, Anna, please don't tell Red about Iron. At least not until the time truly is right. That we neglect our children in favor of Rana, that the thought will sicken him. Oh, before I forget, keep this up there. I think it's look rather go down. Who knows, it may come in handy someday. Okay, समझिए. Have you the means to cause the HMO? If you cannot use it, then you should first obtain the arrest regime but before you brew. We must reach we will town as soon as possible. So please hurry. He not of the arrest city. Okay, अभी हम जिम को जाए ना, तो सीधा वीडियो को एडिट करें. लेकिन ये कपड़ा क्या सही है ना यार, मुझे तो पसंद है, मैं रखने वाले हूँ. तो दोस्तों, अगर तुमने वीडियो को एंजॉय किया होगा एंड तक, तो क्या बोले दोस्तों, अगर तुमने वीडियो को एंजॉय किया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना तुम्हारा कौन सा पार्ट अच्छा था, और ये भी कमेंट करना कि मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ. तो फिर बाय बाय, टेक केयर.